Welcome, guys, to the second part of your lab number 9, which is on op amp as a subtractor, as a multiplier, as a divider, right? So, yes, multiplier and divider won't be covered in this section, just the adder and subtractor and averaging circuit, right? I will try to cover all of it in 15 minutes, right? So, I start with placing the components, which are your voltages, yes, जो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव देते हैं फॉर बायसिंग पर्पस टू योर your 741 op amp. And what else? Yes, आप set of resistors लेंगे which are in your basics, and initially I am taking all same resistors. So let's take 4 1k resistors, and इसके अलावा for my signal generation I am using a function generator and an oscilloscope for observing it, right? So let's start my connections. Right, feedback में लूँगी with 1k resistor, और यही आपका होगा for your inputs. Two sets of input voltages में ले रही हूँ, right? So I'm connecting here, and आपने अपनी थ्योरी पार्ट में कवर किया था कि दोनों आपके इनपुट जाएंगे towards your negative terminal, right? Positive is grounded, and let's say I'm taking a signal of 10 milliamperes. So milliamperes and 10 milliamperes increase the frequency to, let's say, 100, right? It's a sine wave signal, and both resistors को I am giving the same input, so you can observe कि आपका circuit किस तरह का बनता है. And guess आपके signal sine waves आती किस तरह की है? It means 10 and 10 are being fed, so आपका output जो है it should be roughly 20, right? So this is grounded, and ये आपका observe करेगा your input signal, and this would be again grounded. Plus एक काम और कर लेते हैं, let's make our input signal color change, right? इसको हम कर लेते हैं let's say blue, ताकि आपको difference clear हो. So let's start with playing and observing my input. Now my input is in millivolts, so let's move toward 20 is fine, I guess. Both scales आपके 20 में. Let's reverse the colors so you can observe your signal, right? And I am opening it, right. तो ये आपका input signal है, the blue color one is, right, और red जो है वो आपका output signal है. So roughly अच्छा, these values are actually जब आप जिस point पे आप यहाँ से आपका signal start होता है, these are those values, right? You can stop it at any time, right? Let's stop it right now, and you can observe कि जब ये maximum से start हो रही है red, so its value is 41, right? Similarly जब blue आपकी maximum से start हो रही है, its value is roughly, इस time पे it's -19, but yes, it's 19, right? So it means कि आपके जो दो signals हैं, these are amplified output signal is 41 millivolts, and input पे जो आप दे रहे हैं, those are 10 and 10, so 20 millivolts, right, is your input side. So yes, it's observing the correct आपका जो output बन रहा है. So you can observe gain जो है वो आपका यहाँ से you can observe it's a ratio of these two signals, so it's 1 divided by 1. yes, आपका ये count नहीं होगा, जो आपके inputs हैं वो आपके count होंगे, और जो आपके output पे जाके signal आ रहा है वो count होगा, right? So this is your signal
on the input side and this is your summed output signal जो कि approximately same है, right? आप अपनी कैलकुलेशन से भी इसको फाइंड आउट कर लें, आप अपने प्रोसीजर से भी फाइंड आउट कर लें एंड सी द डिफरेंसेस, राइट? देयर वुड बी टू, जो आपका स्केल है जो आप अपने फार्मूला में पुट करेंगे, दीज वैल्यूज़ जो आप अपने ऑसिलोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे ये आप लिखेंगे, प्लस जो आप अपने गेन फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं विच इज़ एक्चुअली दिस वन, राइट? इसको आप कैलकुलेटेड वैल्यूज़ भी शो करेंगे. नाउ लेट्स चेंज माय gaining factors, right? It's top right now. Let's say I change it to, let's say 2k, right? And इसको हम change कर देते हैं to 0.5k, right? So इस scenario में because your gaining element is change, आपके दोनों signals change होंगे because you are also scaling your signals, right? राइट इसमें आप अगर अपने आउटपुट को ऑब्जर्व करें और अपने इनपुट को ऑब्जर्व करें, अच्छा यूज़ वन मोर एलिमेंट, क्योंकि यहाँ से आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल फंक्शन जनरेटर यूज टू, राइट? and oscilloscope में yes you can add another oscilloscope to observe two input signal exactly, right? उनकी values क्या बन रही हैं, ठीक है? and yes यहाँ से आपका output तो it's crystal clear, but यहाँ पे जो आपके दो inputs हैं जो इस side पे आ रहे हैं scaled inputs, right? because this is showing your other version of unscaled input, right? so I can stop it and इसको यहाँ के बजाय let's connect it with your this side, right? जहाँ पे आपका scaled input बन रहा है, right? I'm again changing its color to blue, right? and आप इससे observe कर सकते हैं अपना scaled input but only one of it, right? okay, afterwards जो आपकी voltage आ रही है, that's not the better option कि आप इसको यहाँ से observe करें because it's a constant voltage of this point, right? negative terminal की जो voltage बन रही है, it's being actually showing this one, right? so better option is कि you use two separate function generators जिससे आप इन दो separate input signals दें and use another oscilloscope, right? जिसको आप use कर सकें to observe both of these signals, right? input is observed on this side, right? so one more element जो इसमें मैं आपका add करना चाहती हूँ, this is basically your adder, right? I want to show you a subtractor as well. Subtractor में क्या होगा, this circuit जो आपका ये साइड है ये भी चेंज होती है, ये जो आपका रजिस्टर मैंने प्लेस किया था राइट, इसको भी आप यहाँ पे रख लें बिकॉज आपका जिस तरह का सब्ट्रैक्टर का सर्किट था वो ऐसा था कि आप पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका सिग्नल कुछ इस किस्म का था, राइट? ये आपका कनेक्टेड था विथ योर दिस साइड, ये आपका नेगेटिव साइड का सिग्नल था, राइट? एंड इसको आप देन कनेक्ट कर रहे थे विथ योर input, right? again I'm going for the shortcut, same दो inputs ले रहे हैं which are of 10 milliamperes 100 hertz frequency, these two input signals, right? जो दो अलग अलग terminals पे आपका inverting and non inverting पे you are feeding them, right? to observe the difference again यहाँ पे आप अपना input signal ले लें, right? कोई सा एक, observe anyone, right?
and then play it. Right, I should change color ताकि आपको difference clear हो. That straight line is actually the line of the difference voltage, right? आपका जो output बन रहा है, that's actually a straight line, right? Now it would be clear enough. Now you can observe, right? Previously क्या था, we are actually adding two signals. यहाँ पे आपके दो signals subtract हो रहे हैं. So subtraction के बाद जो आपका output बच रहा है, it's this one, right? प्लस बीच में मैंने आपको एक स्केलिंग फैक्टर भी बता दिया, हाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट स्केलिंग एलिमेंट, राइट? और जब आप एवरेजिंग कर रहे होते हैं, यस आई डिडंट करेक्टेड देम, राइट? ओके, स्टॉप इट, ताकि आपका इशू ना कोई जनरेट हो. देन you change the values, right? Now both are 5, this is 2. Let's decrease it, sorry, both are 1 and this is 2. Let's decrease it to 0.5, so it means an average of half, right? Now this is the kind of circuit जो आपका एक तरह से averaging circuit है. इसको भी आप observe कर सकते हैं if you want to observe it. थोड़ा सा scale आप अपना increment कर लें, sorry decrement कर लें. And presently actually circuit जो मेरा चल रहा है, it's present one is actually a subtractor. So अगर आप इसको observe करें तो जो आपका इनपुट है दैट्स एक्चुअली इंक्रीज्ड वन, बट जो आपका आउटपुट बन रहा है दैट्स अ डिक्रीज्ड वन, राइट? उसकी वैल्यूज डिक्रीज हो गई हैं. सो दैट्स अ सबट्रैक्टर. बट इसी सिनेरियो में ये जो आपका एवरेजिंग वैल्यूज़ हैं उसमें आप इनको 1 1 सेट करेंगे, इसको आप 0.5 सेट करेंगे. बट इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो आपने क्या करना होगा, इसी आउटपुट को ऑब्जर्व करना होगा. प्रेजेंटली इट्स अ सबट्रैक्टर सर्किट, बट वहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व द वैल्यूज़ कि आपके आउटपुट किस तरह चेंज हो रहा है, and note them as well, right? So these are the 4 to 5 different variations of your op amps, right? How you can use it as an adder, how you can use it as an averaging circuit, subtractor, right? Also scaling factor के साथ addition जब होती है वो आप किस तरह कर सकते हैं. You can just play with your op amp and you can design multiple variations and implement it, right, in your multisim, right? So because divisor and your multiplier are not in your course, but if you want, I can also add another section on those two types of your op-amp circuits, right? So this is the simulation version of your lab number 9, sorry, lab number 10. Yes, it's lab number 9, right? So op-amp as an adder, as a subtractor, as an averaging circuit, right? ये किस तरह implement हो सकता है in multisim. This was all about your lab number 9, right? So this is all. Allah Hafiz and take care.